Hello and welcome back to your channel Physics Safari. I hope you guys are doing good and studying well. My name is Abhishek and today is the third video lesson on the circular motion. Okay, so my voice is slightly down, so probably I'm sure you will be able to hear it, but just probably there could be slight difference in the tone. I hope you guys would manage that. आप उसको manage कर लोगे. Important is the content, and I'm sure the voice would be loud enough to reach out to you. ठीक है जी? Okay. So far videos what we have done on the circular motion, we had discussed quite a lot of things, and today I'm going to go ahead and do some practice problem on that. Last video में मैंने बताया था about the tangential and the normal acceleration. I believe आपने उसको अच्छे से कर लिया होगा, सीख लिया होगा, practice भी कर लिया होगा. Okay. Now a couple of things I want to discuss very quickly is, let us say a body is moving in the circular path. A body is moving in a circular path. We know that in one complete rotation, let's suppose starting from here with certain velocity and the radius of the circle be r and the center will be O. Okay. Now let's say it made a complete rotation. In that process, it would cover how much angular displacement. So that angular displacement in this entire revolutions is going to be, entire rotation is going to be 2 pi radians. Let me repeat, that's going to be 2 pi radians. Now the fact which we need to understand, which we need to find, that's what's going to be its angular velocity in terms of the frequency, in terms of the time period. Now before we get into those things, let us understand what is the meaning of time period. Well, the time period, guys, is defined as the time taken to complete one rotation. That's going to be called as the time period. All good? Now we know that omega should be given as what? D theta upon dt. Now let us say that we have, could we just write d theta as omega dt. Let us integrate both the sides. Here with the variable is t, and of course here the theta is the variable. The theta is going to range from where to where? From 0 to 2 pi. 0 to 2 pi. So I'm going to put the limit as 0 to 2 pi. And time should be, as we know, the time taken to complete one cycle is a time period. So time should be from 0 to capital T, where the T is the time period. Now going further, if I integrate this, I should be getting theta, and I put the limits. I should be getting 2 pi minus 0. I'm just ignoring 0 over here. And this should be how much? Omega T. Well, that gives you omega equals to 2 pi upon T. Well, this fellow is just 2. ये 2 है बच्चों, आप इसको अच्छे से लिख लो. Radian per second, that's going to be radian per second. Now one more term that you should be aware of is called as a frequency. That's called as frequency, and we represent that with a small f. Let's say this way. Now what do you mean by the frequency? Well, the frequency is the number of times a body rotates in unit time. That's called frequency. कि एक सेकंड में वो कितने टाइम इसका कंप्लीट साइकिल कर लेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. सो द फ्रीक्वेंसी, माय डियर किड्स, इज गिवन एज f equals 1 upon t. That is given as 1 upon t, and what is the value of t? You can say 2 pi upon omega. So that's going to be how much? T is equals to 2 pi upon omega. So I'm going to put that here. So omega is going to go up. Omega upon 2 pi is the frequency. Omega is 2 pi upon frequency. So omega in terms of frequency could be written as omega is equals to 2 pi f. और ये फॉर्मूले आपको रात को 3 बजे भी याद होने चाहिए. एक कभी भी आपको पता होना चाहिए. नींद में भी अगर कोई पूछता है कि भैया बताओ omega is equals to, in terms of frequency it should be 2 pi f, and omega in terms of time period it should be 2 pi upon t. Now I've discussed all the theories before this. Let us do some practice question, guys. Now the question number 1 that I have going to put in front of you is, let us say that I have probably a body which is making a circular motion. Now let us say that at time t is equals to 0, it is making some 30 degree with this horizontal line. At time t is equals to, or let's just say this is position A. Simple as that. This is position A. From position A, the body moves to position B, which makes an angle of, let's say, 60 degree, and this being your center, R being your radius. R being your radius. Now my question to you, all of you, what is going to be the average velocity, and or maybe you can say what is the angular speed,
what is angular speed, average angular speed in moving from A to B. Point number one, in let's suppose anti-clockwise. ACW means anti-clockwise. Okay, and the second question could be find the angular speed when the body is moving clockwise. CW बच्चों, that means clockwise. मैंने इसको already आपको बता रखा है. If I use the word ACW means anti-clockwise and CW means clockwise. You have to tell me what is the angular speed in moving from A to B when it is moving anti-clockwise and when it is moving clockwise. Video pause करो और इसको try करो. I'm sure you guys would be able to get it done. आप लोग इसको अच्छे से कर लोगे, कोई भी दिक्कत होने वाली है नहीं. तो चलो फटाफट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. Now we know that omega is what? Omega is all about angular displacement upon the time taken. When it is moving from A to B, how much angle does it cover? It's covered 90 degree, which means pi upon 2. So in this case, theta is going to be pi upon 2. Now, sir, the time period is not given. Definitely it is not given. So let us say that at A to B, it takes time t is equals to 1 upon 2 second. In both the cases, clockwise or anti-clockwise, दोनों में the time इसका लगता है 1 upon 2 second, which is 0.5 seconds. So the time is going to be how much? 1 upon 2 second. That means then moving in the anti-clockwise, its angular speed is going to be pi radian per second. सिंपल है ना. बेसिक आपको मैं करवा रहा हूं, बाद में I'm going to take it towards the higher difficulty problems. Now when it is moving clockwise, it's going to make how much? Pi by 2. When it is moving anti-clockwise, so 2 pi minus pi upon 2. So theta, my dear kid, that should be how much? 2 pi minus pi upon 2. That is going to be 3 pi upon 2. That is the theta. And of course, we know the time, which is half seconds. So the omega should be 3 pi upon 2 divided by 1 upon 2. 2 would get cancelled. And that means 3 pi radian per second is the velocity, angular velocity or angular speed when it is moving the clockwise direction. और ये स्क्रीन में बिल्कुल भी फिट कर रहा है. ऑल गुड. चलो थोड़ा आगे चलते हैं. लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम और हम लोग इसको फटाफट करेंगे. वी कैन मेक इट क्विकली, है ना. ऑलराइट देन, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट क्लीन दिस आउट. ओके, नाउ फटाफट लिख लो क्वेश्चन नंबर 2. Okay, let us say that a particle starts from rest. It starts from rest. It means initial velocity is going to be 0. Now it's moving in a circular path of the radius, let us say 1 meter. Now the radius is 1 meter with an alpha, that is angular acceleration of 2 radian per second square. And you have to find in time t is equals to 2 seconds, find point number 1. So basically a body is starting from the rest in the circular motion of radius 1 meter with the initial angular acceleration of 2 radian per second square. Okay, now you have to find speed of the particle. जो मूव कर रहा है आपने उसका स्पीड निकालना है. Also in 2 seconds you have to find the angular displacement. Of this particle. आपको उसका angular displacement भी निकालना है. और आपको पूछा जा सकता है कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो एंड रेडियल एक्सेलरेशन निकालो. और आपसे भी पूछा जा सकता है कि भैया इसका टोटल एक्सेलरेशन कितना होगा, ए नेट. आपको वो भी फाइंड आउट करना है. तो चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन और मैं थोड़ा कैमरा से खेल लेता हूं और ये जाकर सही लग रहा है ना. गुड. ओके, आपने क्या निकालना है, इसका जो ये वैल्यूज हमने दे रखा है. आप इसको ट्राई कीजिए. तब तक मैं इस पार्ट को थोड़ा सर्फ एक्सेल से साफ कर लेता हूं. ओके, बेसिक्स है आज का जो प्रॉब्लम्स है. आई हैव चोजन अ बेसिक प्रॉब्लम्स.
और ए आपको काम आएगा स्कूल लेवल्स पे, तो थोड़े बहुत नीड्स के लेवल पे काम आ गया तो ठीक है, ये जेई में आपके काम नहीं आने वाला है, बट आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा तो इट इज वेरी एसेंशियल कि आप इसको देखो समझो, तब जाके ही आगे का बिल्डिंग बनेगा. You cannot make the third floor without making the first and the second floor. So it's very, very important to ensure that your first and the second floor are very much concrete so that you can make the higher building on that. So this is the concept building session. आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. All good? चलो फटाफट देखते हैं. एक बात तो समझ में आ रही है कि we have alpha means we have the acceleration. It means omega is not going to be constant. उसका value change कर रहा होगा. And in the previous classes, I have given you three equations of circular motion. Omega t is equals to omega naught plus alpha t. Omega t square minus omega naught square is equals to 2 times of alpha of and your theta. And the third one which I have given to you, theta is equals to omega naught t plus half of alpha t square. All these things were very much in the resemblance with the straight line motion के equations के साथ. और आपको अभी वही कुछ यहाँ पे करना है because we have the alpha and the moment we have the alpha, my dear kids, the body is not going to be moving with the UCM, it's going to be in the non-uniform circular motion. वो NUC में चलेगा, non-uniform circular motion में चलेगा. पूछ क्या रहा है? What are they asking you? The first thing, speed of the particle. बच्चों ध्यान रखना, speed means they're talking about V, and we know that V is equals to R times of omega, which clearly means the omega is missing over here. We have the radius, we have the time, we have the alpha. Can we just find omega? Of course we can do that. So omega, as we all know, should be given as omega plus u plus omega naught plus alpha t. So omega naught is how much? Starting from the rest, it means omega naught is going to be 0 times anything is going to be 0. So this is going to be 0. Alpha is given as how much? 2. Time is also given as 2. That means omega should be 4 radian per second is your omega. Now, since I've got to know the value of omega, I can easily find the value of V, which means V is going to be R times of omega, R being just 1 meter, 1 times of 4, that's going to give you 4 meter per second. Ensure you write the proper units. When I'm talking about the velocity, speed, linear, it has to be the meter per second. And when I'm talking about the angular, it has to be the radian per second. You have to be careful with that. इसमें कोई भी आपको मुश्किल, कोई भी गलती आपको करने का गुंजाइश नहीं है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, चलो ठीक है पूछने दो, क्वेश्चंस का तो काम ही होता है पूछना है ना. We just try to figure out theta. Theta is equals to what? What are the things that we have? We have omega. Sorry about that. We have a alpha. We have radius, and we have the time period. So theta could be given as what? Omega naught t plus half a t square. It could be given as ut. That is, if you can remember that way also, ut plus half a t square, omega naught t plus half of alpha t square. All right. So omega naught is 0. So this part is going to be 0 plus half of alpha. Guys, what is the value of alpha? Which is 2. So alpha is going to be 2. Time is 2. 2 square is 4. That means theta is going to be again 4 radian. क्या बात है? हमारे सारे आंसर्स 4 4 4 ही आ रहे हैं. ये तो चमत्कार से कम है नहीं, है ना. चलिए अब पूछ रहा है आपका टेंजेंशियल एंड द लीनियर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन. माय बैड. ओके, वी आर आस्किंग यू दिस वन. देखो बड़ा सिंपल सी बात, आपका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा दैट इज गोना बी योर r टाइम्स ऑफ अल्फा. इसमें तो कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं, है ना. सो ये क्या हो जाएगा बच्चों, r कितना है आपका 1 मीटर दे रखा है, अल्फा इज 4. Oh, by alpha is 2. Sorry. At least finally we got something. A tangential is going to be 2 meter per second square. Please do not put it in the radian per second square. It is the tangential. It's going to be linear now, you know. So the unit is going to be the linear, that is 2 meter per second square. और क्या पूछ रहा है? रेडियल पूछ रहा है. ठीक है, पूछने दो. ए रेडियल और ए नॉर्मल. अरे यार वेक्टर कहाँ तक हो रखा है. चलो भाई तुम चले जाओ. तो ए रेडियल is going to be how much? You can use your v square upon r, or you can also use r omega square. Omega is known to me, so I'm going to use r omega square. Omega at any time t. So let's suppose r omega square t. Omega is how much? 4. Well, r is how much? 1. Damn, it's going to be too much. It's going to be 16 radian per. Okay, again I'm using the same thing. It's going to be 16 meter per second square. R omega square is going. I'm sure कि आपको ये पता है ना, आपको ये पता है. नहीं तो फिर से देख लो एक बार, मैं पिछले क्लास में बताया था. ए रेडियल और ए नॉर्मल और ए सेंट्रिपेटल इज गोना बी हाउ मच? v स्क्वायर अपॉन r. v could be how much? r omega whole square upon r. So r square, r would be cancelled and we should be having r
ओमेगा स्क्वायर। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अगर याद नहीं है तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो फाइनल आंसर बच्चों क्या हो गया आपका 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो कंडीशन क्या है, इट इज अ सर्कुलर मोशन, इट विल हैव सम रेडियल एंड सम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपका टेंजेंशियल इस तरफ हो गया है ना, और रेडियल आपका इस तरफ हो गया। टेंजेंशियल इज हाउ मच, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर per second square. This fellow is 16. So the acceleration should be somewhere. Net acceleration is going to be in this direction. And that, my dear kids, you can easily find out as a square normal plus a square tangential. Normal, radial, centripetal सभी एक हैं। तो मैं क्वेश्चंस में कभी कभी रेडियल लिखता हूं, उसको नॉर्मल लिखता हूं, जस्ट टू इंश्योर कि आपको वो समझ में आ रहा होगा और आप उसमें सबको आपको पता होना चाहिए कि तीनों वैल्यूज इक्वल होते हैं। तो ठीक है, अब कर दो ना 16 स्क्वायर प्लस दिस इज गोना बी हाउ मच 2 स्क्वायर। अब जो भी है 256 का प्लस 4 कर दो 260 हो जाएगा, 262 वो आपकी मर्जी, 260 हो जाएगा ना, आपकी मर्जी, आप उसको कैलकुलेट कर लेना। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न की तरफ चलते हैं। टुडे आई एम गोना, एज आई टोल्ड यू, आई विल बी डूइंग सम नाइस फंडामेंटल क्वेश्चंस। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो फॉर श्योर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऑन दैट यू कैन बिल्ड अप द ह्यूज कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग, आई वुड से, है ना। आप उस पर आगे जाकर और भी अच्छे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। नंबर 3। Now, number 3 says that let us suppose a body is moving in the anti-clockwise direction. It made n1 number of turns in time t1. In time t1, एक बॉडी है जो एंटी क्लॉकवाइज में n1 number of turns made in time t1, and at the same time I have another body which made, let's suppose, n2 number of terms in time t2. ऐसा इसने 2 बॉडीज का, और सेम बॉडी मेड n1 टर्न्स इन टाइम t1 और वापस से क्लॉकवाइज n2 नंबर ऑफ टर्न्स इन टाइम t2 उसने बनाया है। योर क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज angular speed over the time t1 plus t2. Over the time, where is my blue marker? Just a second. Okay, here we have speed. This is good. Over the time t1 plus t2. चलो इसको आप लोग ट्राई करो। सिंपल है बट अच्छा है। एक ऐड है ना, टेढ़ा है पर मेरा है। लाइकवाइज इट्स अ सिंपल वन बट इट्स अ गुड वन। ये आपकी थोड़ा सा कंसेप्ट बिल्डअप में डेफिनेटली ये पार्टिसिपेट करेगा, है ना। ओके, देखो बड़ा सिंपल सी बात है। एवरेज एंगुलर स्पीड शुड बी हाउ मच, द टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टोटल टाइम टेकन। और भी कोई इसमें अलग बातें तो है ही नहीं, है ना। सो ओके, माय वॉइस अगेन। ओके, इट इज मेकिंग n1 नंबर ऑफ टर्म्स बच्चे ना। अपने को पता है कि इन वन टर्न व्हाट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 pi. So for n1 number of terms, the total displacement is going to be how much? 2 pi times of n1. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, एक बात और, नॉर्मली व्हाट वी डू इज, हमने एंटी क्लॉकवाइज को वी टेक पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव ले लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, और हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं। ओके देन, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मैं इधर ही लिख दूं। इस केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 pi times of n1, and in this case if I'm taking negatives it's going to be 2 pi times of n2. So the net displacement, my dear kids, is going to be how much? Now this one minus this one, so average angular speed should be, now they're talking about the speed, so we are only dealing with the magnitude. That means 2 times of pi times of n1 minus 2 pi times of n2 over the total time is how much? t1 plus t2. Let's talk about the magnitude. So omega average should be, you can take out the 2 common and you should 2 pi in fact common, so it should be n1 minus n2 mod upon t1 plus t2. Well, this is going to be your average angular speed over time the period of t1 plus t2. All good? Let's move on towards the next question और हम लोग फटाफट एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
Meanwhile, you can note it down. I'm gonna erase this one. मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ. देखो, सर्कुलर मोशन का अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी जंप इनटू रोटेशन. इसीलिए मैं अभी इसको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बार बार इस सर्कुलर मोशन सामने आ जाए तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा. The only problem with the circular motion transition is before that we were only talking about the linear motion, translational motion. और अभी जाके we are talking about something called circular motion. तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा बच्चों, बट आई एम श्योर आप इसको ग्रास्प करोगे, मैनेज कर लोगे इस ट्रांजिशन फेज को और आप अच्छे से इसको टेक ओवर कर पाओगे. चलिए, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं मजे में और आप मेरे साथ सीखते जाओ. एंड इफ यू गेट सम इश्यूज, सम डाउट्स, you can connect with me on my email provided in the description box towards the end. Also, you can use the comment box to discuss with me, और आप हमसे बात करने के लिए उसका यूज कर सकते हो. चलो, एक और क्वेश्चन हम लोग बच्चों देखते हैं. Let us suppose that a body is moving in the circular path. एक बॉडी बच्चों एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और इसका रेडियस मान लो कि वो 2 मीटर का रेडियस है. The radius is 2 meter. Now this body is moving with an angular velocity of anti-clockwise. जो ओमेगा है वो है 4 रेडियन पर सेकेंड. एंटी-क्लॉकवाइज में ओमेगा है 4 रेडियन पर सेकेंड और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है बच्चों वो मैंने ले लिया है clockwise alpha, that is going to be 1 radian per second square. So I'm giving you all the angular parameters including the radius, and let's suppose center is here. This is the center O. Radius being 2, omega being 4, anti-clockwise, and alpha being clockwise. Now the question to you is, because it is a case of deceleration. The reason being the body is rotating in this direction anti-clockwise, and acceleration जो इसका है वो clockwise है. It means the body को वो रोकेगा, it will stop the body और धीरे धीरे body slow होता जाएगा. Now the question to you is, find the time when body would come to momentary rest. Body comes to momentary rest. Now why the hell I'm using the word momentary rest? The reason being वो acceleration इसको रोकेगा और वापस से clockwise direction में उसको move करेगा. अगर आपको linear translational motion में याद है आपने देखा होगा कि let us suppose if a body is moving towards right with certain velocity, let's suppose 4 meter per second, और इस पे एक acceleration लग रहा है, let's suppose 1 meter per second square, then what going to happen? It is going to go ahead for a certain amount of time, a certain distance, और यहाँ पे velocity going to be 0 और वापस से it will start moving in this direction. What is the reason? Reason is this constant acceleration acting on this in this direction. तो वापस से body इस तरफ move करेगा and when it crosses this mean position, it force से 4 meter per second से इसको cross करके पीछे चला जाएगा. बात समझ में आ रही है? तो and it will keep on moving after that क्योंकि acceleration हमेशा नेगेटिव में है. तो this is the situation over here. The body is having a angular speed in this direction and the acceleration is in this direction, which means the body is gonna retard it and after some time it is gonna come to the rest momentarily and उसके बाद फिर से वो clockwise move करना start हो जाएगा. तो आपको निकालना वो time जब उसका velocity momentarily 0 होगा. That is when you have to find the time when the body comes to the momentarily rest. आप इसको ट्राई करें, पॉज द वीडियो और आप इसको ट्राई करो, फिर हम दोनों इसको साथ में करेंगे, फिर अपन लोग इसको साथ में करेंगे जी, है ना. ओके, आई बिलीव आपने इसको ट्राई कर लिया होगा. अब साथ में इसको फटाफट करते हैं. ओके, व्हाट वी जस्ट नीड टू फिगर आउट, वी नो दैट लेट्स सपोज द टाइम व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 0 इज t, so the omega t should be how much? U plus at. In this case is going to have how much? Omega naught plus alpha t. कोई दिक्कत नहीं है. This is going to be 0 in some time. Omega naught is how much? Again same thing, anti को positive मान लो तो 4, alpha is clock, negative है 1 times of t, which means the body is going to a momentary rest in 4 seconds. कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी मुश्किल वाली बात यहाँ पे तो सॉरी यहाँ पे तो थी ही नहीं, है ना. ओके, अच्छा, इसमें और what they can ask you is find initial speed. That means they can ask you to find the value of v. आपको a निकालना होगा. All good? Also they can ask you to find what? Find angular or radial or normal acceleration and
दी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू आपको निकालना है। और एक बदमाशी और कर सकते हैं कि आपको टोटल एक्सेलरेशन निकालने को बोल दिया जाए तो भी आप इसको इजीली कर सकते हो, इसमें कोई मुश्किल वाली बात तो है ही नहीं, है ना जी। चलिए, तो इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा, अपने को पता है ओमेगा इज गिवन विच इज 4 रेडियन पर सेकेंड, सो वी नो दैट v इज इक्वल्स टू r omega. So initially r is how much, 2, of course that's going to be same, omega is given as 4 initially, so 8 meter per second. Nicely and easily done, कोई भी मुश्किल वाली बात इसमें अपने को दिखी नहीं, है ना। दूसरा पार्ट क्या पूछता है, फाइंड द नॉर्मल एक्सेलरेशन एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अरे अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल एक्सेलरेशन बच्चों क्या हो जाता है, हटाओ इसको, नॉर्मल एक्सेलरेशन शुड बी हाउ मच, आर ओमेगा स्क्वायर या फिर v स्क्वायर अपॉन r, आपकी जो मर्जी हो, आपकी जो श्रद्धा हो, आप इसको लिख सकते हो। रेडियस इज हाउ मच, 2 मीटर, ओमेगा इज हाउ मच, 4 स्क्वायर इज 16, दैट मींस इट इज गोना बी 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहो तो इसका भी यूज करके निकाल सकते हो। तो v कितना है, 8 स्क्वायर इज हाउ मच, 64, रेडियस इज हाउ मच, 2, सी यू कैन गेट व्हाट, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई मुश्किल तो है ही नहीं, है ना। नाउ वी हैव आल्सो हैव टू फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, तो टेंजेंशियल कैसे निकालोगे जी, अल्फा पता है मेरे को, ए कितना, अरे वेक्टर हटाओ इसको, ए टेंजेंशियल शुड बी हाउ मच, आर अल्फा, तो आर इज हाउ मच, 2, अल्फा इज 1, so 2 into 1 that's going to be 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका निकल गया ये। तो नेट जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, देखो इसमें ऐसे हो रहा है ना, द बॉडी का द वेलोसिटी इस तरफ है, बट टेंजेंशियल इज ऑन दिस डायरेक्शन एंड द रेडियल इज इन दिस डायरेक्शन, सो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इस तरफ कहीं होगा, दैट इज गोना बी द नेट एक्सेलरेशन, है ना, वो कहीं इस तरफ होगा, दैट इज गोना बी द ए नेट। कोई दिक्कत नहीं है, तो ए नेट कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए नेट इज गोना बी ए स्क्वायर नॉर्मल प्लस ए स्क्वायर टेंजेंशियल। आप इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे, यू कैन फाइंड द आंसर टू दिस। ऑल गुड, कोई दिक्कत। चलो एक और दो क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छे अच्छे। आई बिलीव आपने इसको नोट कर लिया होगा, इफ यू नॉट देन पॉज द वीडियो, आप इसको अच्छे से नोट कर लो, नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। आई एम गोना गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में करेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना। तो सो या एज आई टोल्ड यू, आप लोग पूरा फोकस करो इस टॉपिक पे, अच्छे से करो। रोटेशन समझाना आपको मेरी जिम्मेवारी है, दैट इज माय सोल रिस्पांसिबिलिटी एंड दैट्स माय मॉरल रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। मैंने आपको रोटेशन समझाना है, अब बस मेरे साथ चलते रहो और फिर देखते हैं कैसे आपको रोटेशन परेशान करता है, उसको हम लोग देख लेंगे, है ना, उसको मजा आ जाएगा ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, नंबर 5। लेट अस सपोज दैट अ बॉडी इज मूविंग इन द सर्कुलर पाथ, ऐसे जा रहा है और एक सर्कल जो है वो 10 सेकंड में कवर अप करता है। इट कवर अप, you know, the entire one rotation is time t is equals to, let us suppose 10 second। तो आपका दे रखा है time taken to complete one, you know, round is 10 second। आपको निकालना है find the average velocity, find average velocity, find the average velocity। अब ये क्वेश्चन आपके हवाले है, आप इसको करके देखो और फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, फिर देखते हैं आफ्टर यू चेक इट आउट अपना आंसर कितना मैच करता है। आपने इसको कमेंट बॉक्स में लिख के देखो। ऑफ कोर्स वी से टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, लेट्स बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इफ यू डू राइट द कमेंट, इफ यू डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, दैट ऑफ कोर्स एज पर द एल्गोरिथम ऑफ यूट्यूब इट अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ यूट्यूब। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं टू राइट इन द कमेंट बॉक्स, इट्स अ म्यूचुअल सॉर्ट ऑफ थिंग, you help us, I'm going to help you. Anyways, so find the average velocity if it takes 10 seconds to complete one rotation। भैया सिंपल सी बात है, body would start from here, पूरा एक चक्कर मार के वापस आ गया। What is the net displacement? That is 0, which clearly means the average velocity is going to be 0। मैंने बस इसको आपको परेशान करने के लिए लिया है। After doing these so many questions, I took this example to just ट्रबल योर लिटिल बिट, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग की बत्ती और खुल जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चों, चलिए एक और देखते हैं फटाफट, लेट अस मूव ऑन। मैंने इसको साफ ही कर देना है जस्ट टू हैव द क्लियर कट स्पेस। स्पेस का बहुत इश्यूज होता है ना जी। ओके, तो लेट अस से एक एग्जांपल हमने 6 करना है। एक बॉडी है व्हिच इज और लेट्स सपोज एक देयर इज अ व्हील व्हिच इज मूविंग विद एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा
और अपने पास इसका रेडियस दे रखा है जो भी है ना। और ये जो 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 दिस इज व्हील, इट इज मेकिंग 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में 120 रिवॉल्यूशन कवर अप करता है। योर क्वेश्चन इज फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड, दैट इज ओमेगा। आपने इसका ओमेगा फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द ओमेगा ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। चलिए पॉज द वीडियो और इसको अच्छा से ट्राई करो। आई एम श्योर आप इसको इजीली कर लोगे, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। ऑल गुड, आपने इसको ट्राई कर लिया। एक बात समझो, it is making 120 revolution per minute, which means it is moving at a constant angular speed। एक constant speed से move कर रहा है। अच्छी बात है, अगर एक constant speed से move कर रहा है बच्चों, which means the tangential acceleration तो जीरो ही होगा इस केस में, है ना, कोई दिक्कत है नहीं, tangential तो जीरो ही होगा, right? It means only acceleration which we have is that is going to be a radial। ये सिर्फ एक्स्ट्रा बातें मैंने आपको बताया है, इस क्वेश्चन में इसका कोई नीड भी नहीं है, बट यू शुड नो इफ द बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, इट मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। दिस इज अ केस ऑफ यूसीएम, इट इज अ केस ऑफ यूसीएम, इट मींस ए टेंजेंशियल बच्चों इज गोना बी जीरो, नो बिग डील। ऑल गुड, ओके। अब मेरी बात समझो, एक रिवॉल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इन वन रिवॉल्यूशन लिख लो, इन वन रिवॉल्यूशन the theta is going to be how much? Of course 2 pi। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, अपने को पता है 2 pi कवर अप करेगा। कितना रेवोल्यूशन कर रहा है? 120 रेवोल्यूशन। So the total number, total value of the angular displacement is going to be how much? Theta total, that's going to be 2 pi times of 120 in how much time? In 1 minute। So बच्चों omega should be how much? Omega का वैल्यू कितना हो जाएगा? That is going to be the total displacement, which is 2 pi times of 120 over the time taken is 1 minute, which we can convert into the seconds। तो क्या हो जाएगा बच्चों? That is going to be 60, which means omega should be how much? Tick 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 4 pi radian per second। कोई भी मुश्किल वाली बात है नहीं। और इसमें को पूछता है कि आपका रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? What is going to be the a radial? Okay, r omega square। r is how much? अब कुछ भी वैल्यू ले लो, इसमें r का वैल्यू कुछ भी ले लो, चलो 2 मीटर का रेडियस है ना, तो दिस गोना बी हाउ मच? 2 टाइम्स ऑफ 16 पाई स्क्वायर, दैट मींस 32 पाई स्क्वायर इज गोना बी योर रेडियल एक्सेलरेशन। और कोई गलती से पूछ दे कि टेंजेंशियल, बोलना भाग, इट्स गोना बी जीरो, बिकॉज इट इज मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसका रेडियल एक्सेलरेशन होगा जीरो। सो द नेट इज गोइंग टू बी अलोंग द रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई है, तो आज का मेरा काम खत्म हुआ। If you could understand these much of things, well, that's great. Next video lesson mein, I'm going to take you to the next level. Till then, keep studying and keep learning, and do not forget to like, share and subscribe if you like the way I teach. ठीक है बच्चों? So thank you so much. I'm going to see you in the next video.